So we are going to tell you, I'm going to tell you regarding wiring schemes and other network technologies. Multiple wiring schemes are not limited to Ethernet technology. Almost all other network technologies use different wiring schemes. ठीक है जी, मैं slide number 4 को read कर रहा हूँ, ठीक है? तो you have to, consider this particular slide. अब मैं general discussion नहीं कर रहा, ठीक है? I'm on slide number 4, right? Locally uses hub physical star to simulate a bus topology. IBM token ring also uses hubs physically star topology to simulate a logical ring network. Now, actually, this was the topic associated with the previous chapter. ये आपके पास एक चैप्टर था. अब इसमें जो प्रीवियस चैप्टर का ये टॉपिक है जो इसमें वो कवर कर रहे हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन आइडिया. वी हैव डिस्कस सो फॉर. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग फिजिकल स्टार and logical bus that we have discussed regarding in hub. Inside a hub we have discussed this particular concept. तो actually local talk का मैंने आपको एक concept बताया था कि Macintosh computers जो हैं they are using local talk networks at that time when they have when the Mac computers were came at during those days they have given a technology that is called as local talk. अब local talk कैसे work करती थी? I have told you that this is a local area network that you can design with Mac computer systems or Mac computers. ठीक है, ये कोई और computers उसके साथ attach नहीं हो सकते थे. Only Mac computers can connect it and they form a LAN network and you can transmit and receive the data through that particular network. Now see, local talk use hubs physical star टू सिमुलेट अ बस टोपोलॉजी. अब देखें उसमें आपके पास यूज क्या होता था? फिजिकली वो स्टार होगा. इट कुड बी द पॉसिबिलिटी दे आर यूजिंग अ सेंट्रल डिवाइस हब टू कनेक्ट 3 or 4 कंप्यूटर्स टुगेदर. अगर तो आपके पास वायरलेस लैन है तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी थ्रू द ब्लूटूथ और थ्रू द वाईफाई दे आर बीइंग कनेक्टेड. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है देन डेफिनेटली यू माइट हैव टू यूज द सेंट्रल डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज अ हब. ठीक है, तो हब जो है इट इज गोइंग टू शो यू द फिजिकल स्टार. फिजिकली आपको स्टार लगेगा लेकिन इंटरनली इट इज गोइंग टू सिमुलेट एज अ बस टोपोलॉजी. आई हैव told you in the last lecture in detail कि how does it works. ठीक है, then we have the IBM token ring also use hubs physically as star topology to simulate a logical ring network. देखें, I think I have discussed with you the ring topology also. Inside a token ring what we have the circular topology in which inside a ring, and we have a token which is any device who owns that particular token can send and receive the data. ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था ना आपके साथ. तो IBM token ring also use hubs. अगर IBM token ring topology use हो रही है तो it might also be using hubs like physically स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, आपको फिजिकली वो नजर आएगी कि दिस इज स्टार बट टू सिमुलेट अ लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क. एक्चुअली लॉजिकली वो क्या होगा? रिंग नेटवर्क होगा. ठीक है, एंड वी नो दैट इनसाइड अ रिंग नेटवर्क व्हाट वी हैव द टोकन रिंग मैकेनिज्म. ठीक है, हमारे पास टोकन होगा एंड दैट टोकन व्हाटसोएवर और whosoever the device who owns that particular token can send and receive the data, right? And when we are talking about a local talk networks, तो local talk networks के अंदर हमारे पास physical star होगी and but actually हमने simulate किया हुआ है logical bus topology, right? I can show you the diagram. This is the diagram. This is for the wiring schemes and as a network technology. This is a local talk technology. We have the Mac operating systems or Mac computers which are connected with the transceivers. Make sure short cable is being connected with the network interface card और network interface card आपका किसके साथ connected है? With the AUI cable to the transceiver. So this is the basic idea of a local talk connectivity inside a Mac operating system. देखें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने hub use नहीं किया. But if you have the multiple computers, now this is a point-to-point computers or point-to-point connectivity. ठीक है, लेकिन अगर हमने more than 3, 4 or 5 computers को use करना है तो we might be using the central device that is called as a hub, right? अब आ जाएं चैप्टर 11 पे. अच्छा जी, अब देखें एक क्वेश्चन ये था. क्वेश्चन वाज दैट कि जी इफ वी वांट टू एक्सटेंड द लैन. अब देखें आपने लैन तो बना लिया, यू हैव मेड द लैन, बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट लैन हाउ इट इज पॉसिबल? आपके पास एक बिल्डिंग है. लेट्स सपोज द बिल्डिंग इज इन मेहरान यूनिवर्सिटी.
सेकंड वन इज इन हाईएस्ट। वहाँ पे दो लैंड्स हैं, एक लैंड हमारे पास मेहरान में है और दूसरा आपके पास है हाईएस्ट इन हैदराबाद। नाउ इफ वी वांट टू कनेक्ट दीज टू लैंड्स, व्हाट वी रिक्वायर, we cannot extending our lands by using normal cable. I mean to say that STP and UTP cables. Why we cannot use it? Because उसका reason मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। तो in this particular chapter we have to look upon fiber modems, repeaters, bridges and switches, right? So introduction, LAN technologies are designed to operate within the same building. That's very clear. I have told you that LAN is always inside the same building. However, most companies or institute have offices located far apart from each other. They can have different software companies and they might have their one office in Hyderabad and one is in Karachi, right? And they want to lay down their own intranet. I'm not talking about internet, I'm talking about intranet. So they have a LAN in Karachi, they have a LAN in Hyderabad, but they want to connect their LAN by using its own connectivity, not an internet. देखिए एक वे तो ये है ना, वो थ्रू इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, दैट इज वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन दे वांट टू ले डाउन देयर ओन नेटवर्क। तो इसके लिए हमें अपने लैंड्स को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। अब लैन एक्सटेंशन के लिए व्हाट वी रिक्वायर, वी मस्ट रिक्वायर सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस, certain sort of such sort of things which are not normally used inside our local area networks, right? तो अब वो क्या चीजें हैं, we have to discuss in our new slide, in our future slides. So distance limitations in LAN design. The maximum cable length of a LAN is fixed because the electrical signal level gets weaker as it travels. The delays must be short to allow access mechanism SISMA CD token passing work properly. Now see, there are two reasons कि आप LAN को extend क्यों नहीं कर सकते by using the same medium. Are you getting my question? This is very important. Distance limitation and the LAN design. देखें, inside a building, let's take an example of software department. You have 6 labs, right? You have make a local area network inside the same building, ठीक है जी, आपका LAN काम कर रहा है। लेकिन अगर हमने इस LAN को एक्सटेंड करना है ना, तो if you people are familiar with our different departments are being connected through a fiber, ये चीज अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए कि all the departments are being connected using a fiber optic cable, right? LAN हमारा एक है, we have a single LAN inside our university, right? But they all are being connected using a fiber. Why not through an STP or UTP cable? Definitely the question arises कि हम क्यों इसी LAN को, अगर हम outside of a building, let's suppose अगर मैंने ICPC डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी देनी है, तो मैं एक बहुत ही लंबी STP और UTP केबल का पूरा एक बंडल लाऊं and I have to connect my software department with the ICPC department, but we didn't have such type of scenario in our university. The reason is your signal cannot travel up to a maximum length through that particular medium, ठीक है। The reason is the electrical signal level gets weaker as it travels. आपका जो signal level है वो weak हो जाता है कि जैसे ही वो travel करता है आपके medium के through, I mean through an STP or UTP cable. And I have told you that there is a certain maximum distance. After that your signal is going to be attenuated, ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर 500 मीटर लेंथ है आपके पास, जैसे 10 बेस 5 है, तो 10 बेस 5 का मतलब ये है कि जी 500 मीटर तक आपका सिग्नल ट्रैवल करेगा इन अ नॉर्मल वे, राइट? आफ्टर दैट योर सिग्नल इज गोइंग टू बी एटेन्यूएटेड, इट रिक्वायर्स सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है, आई वुड बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स कि रिपीटर इज गोइंग टू रिपीट योर सिग्नल, इट इज गोइंग टू एनहांस द strength of your signal, ठीक है। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। Right now you have to understand the two limitations. One is called as electrical signal level gets weaker as it travels. Second is the delays must be short to allow access mechanisms SISMA CD token passing and work properly. Now see, we know that Ethernet networks always works on a SISMA CD mechanism. Carrier sends multiple access collision detection. I have told you that, ठीक है। तो अगर आप रिपीटर्स लगा के अपनी लेंथ को बढ़ा भी लेंगे तो आपके जो एक्सेस मैकेनिज्म्स हैं दे वुड नॉट अलाउ यू टू एक्सटेंड योर नेटवर्क मोर देन देयर लेंथ, ठीक है। सिस्मा सीडी कहता है कि जी मैं डिटेक्शन जो है अपने मीडिया की
वो मैं मैक्सिमम 500 टू 1000 मीटर तक ही एक्सेस कर सकता हूँ डेटा को या अपने मीडियम को, ठीक है। उससे अगर ज्यादा लेंथ होगी ना तो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर डज नॉट वर्क। So for that reason, I mean, I'm just going to give you an idea. Okay, let's suppose if you're going to say that we are going to put up repeaters. अब पहले ये मैं पहले I mean प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, जो रेमेडी है वो बता रहा हूँ कि जी अगर आप कह रहे हैं कि जी आपका सिग्नल एटीन्यूट होता है, ठीक है, तो I mean मैक्सिमम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा फ्रॉम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट टू आईसीपीसी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर 500 मीटर वी आर गोइंग टू प्लेस रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या करेंगे, आपके सिग्नल को बूस्ट अप करेंगे एंड योर डेटा वुड बी रीच विदाउट एनी प्रॉब्लम टू द आईसीपीसी डिपार्टमेंट। तो आपका पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इफ यू आर गोइंग टू प्लेस द रिपीटर्स, ठीक है, आपका सिग्नल तो एटीन्यूट होकर किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगा, बट द एक्सेस मैकेनिज्म दैट हैज बीन डिफाइंड बाय द ईथरनेट networks or ethernet technology is sysma cd, which does not allow you to pass that particular data more than 500 to 1000 meters, ठीक है। आप उसको 1000 मीटर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर उसे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे that particular technique would not work over an ethernet technology or ethernet data ethernet mediums, ठीक है। So these are the two main reasons because of that you cannot extend your LANs beyond the limitations, ठीक है। आप उसको 500 या 1000 मीटर तक तो लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप कहेंगे कि लेट्स सपोज यू वांट टू एक्सटेंड योर लैंड अप टू 10 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स, you would not be using this particular technique. I mean to say that STP or UTP cable, right? So that was the main reason. LAN extension, several techniques extend diameter of LAN medium. Most techniques use additional hardware. LAN with signal relays between LAN segments. The resulting mixed technology stays within original engineering constraints while spanning tree distance. अब देखें, this is what I mean. I have told you, I have given you the explanation thoroughly in a I mean जो मैंने discussion अभी पीछे की है ना, that is all about this slide ना। I mean several techniques extend diameter of LAN mediums, ठीक है। Most techniques use additional hardware. LAN signals relate between LAN segment and all that, ठीक है। Now if you can look upon this particular diagram, तो इस डायग्राम के अंदर देखें, now this diagram is going to tell you how fiber optic is being connected to make your network as an extended LAN, ठीक है। अब आप देखें कि most of the time nobody tells you that कि जी फाइबर कैसे कनेक्ट होती है, nobody knows that। हाँ जी फाइबर लगी हुई है, आईसीपीसी से सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट फाइबर के साथ कनेक्टेड है, बट हाउ इट इज कनेक्टेड, I mean what is the mechanism through which it is connected? Now see, there is called as a fiber modem, right? फाइबर मोडेम आपके पास एक एंड के ऊपर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, नॉट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर बट विद द स्विच, right? That is called as connection from a computer that would be coming to your switch, and from switch to that particular modem, that is called as a fiber modem. And then on the other hand it is being connected with some other network that is called as your ethernet hub or something like that, right? And in between you have an optical fiber, and we are very much familiar with an optical fiber. The optical fiber always been used for a long haul networks, ठीक है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज इफ यू वांट टू मेक योर ट्रैवल सिग्नल फ्रॉम कराची टू हैदराबाद विदाउट एटीन्यूएशन, यू विल ओनली बी यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो आपका सिग्नल विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी एटीन्यूएशन ट्रैवल करेगा विदाउट एनी रिपीटर फ्रॉम कराची टू हैदराबाद विदाउट एनी इशू, ठीक है। बिकॉज इन एन ऑप्टिकल फाइबर योर डेटा इज ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास फाइबर मोडेम एक डिवाइस है जो यूज होती है, जो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क्स को फाइबर के साथ कनेक्ट करती है। दैट इज अ कंक्लूजन, ठीक है जी। अब देखें, एक कंप्यूटर को तो आप फाइबर मोडेम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना। लेट्स सपोज वी हैव अ 60 कंप्यूटर्स और 120 कंप्यूटर्स और 200 कंप्यूटर्स इनसाइड अवर software department. So all these computers are being terminated at a particular switch. और उस स्विच के साथ आप एक फाइबर का लिंक आता है जो आप स्विच के एक पोर्ट के अंदर लगाते हैं, एंड स्विच हैज दैट पर्टिकुलर फाइबर लिंक पोर्ट, उसके साथ लग जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर फाइबर पोर्ट इज बीइंग कनेक्टेड विद एन फाइबर ऑप्टिक केबल, एंड दैट फाइबर केबल इज बीइंग एक्सटेंडेड अप टू हाउ लॉन्ग, जितना आपने करना है उसको कर लें, और उसको सेकेंड एंड पे जाके उसी तरीके से आप किसी दूसरे लिंक के साथ या किसी दूसरे लैन के साथ कनेक्ट कर लें। सो दिस इज हाउ यूर your optical fiber would be used to extend your local area network. If you can see,
दिस इज अ सिंगल लैन, ठीक है। ये लेट्स सपोज दिस इज अवर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, और ये हमारा क्या है, दिस इज अवर आईसीपीसी डिपार्टमेंट, राइट। So they both are going to, what they are going to do, they are going to be connected or they are going to be extended by using a central medium that is called as your ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है जी। ये आपके फाइबर मॉडेम्स दोनों साइड पे लगे हुए हैं जो आपके पास इंटरफेसिंग का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लेट्स सपोज if you want to connect an RJ45 connector into a into your computer, तो ultimately there must be an RJ45 jack at the back of your computer, ठीक है। अगर आपने thick net को लगाना है तो there must be a thick net connector at the back end of your network interface card, and if you want to place I mean BNC connector, a thin net, you must have a BNC connector that must be present back at the back of your NIC card। अगर जैक ही नहीं होगा तो वेयर यू हैव टू इंसर्ट, ठीक है। आपके पास कनेक्टर तो है, आपके पास वायर भी है, बट वेयर यू हैव टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर वायर और दैट पर्टिकुलर कनेक्टर, so there must be some interface on which that particular wire has to be terminated। So in the same way, you have never seen any sort of optical fiber interface at your computer, किसी ने नहीं देखा होगा on your laptop, onto your computer, but there is a mechanism of fiber modems। This was the older technology। Nowadays we do have certain sort of fiber optical connectors or link which are being terminated at a switch, और जो switch आजकल हमारे पास आ रहे हैं, they do have that particular interface। You have to put them inside a switch, and that particular fiber is being connected on the other hand with some other local area network। So this is how you're going to extend your लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी, और क्या काम होता है इनका फाइबर मॉडेम्स का। दे आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वर्किंग एज अ ट्रांसीवर्स। दे आर गोइंग टू ट्रांसलेट योर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल and digital to analog signal, plus they are going to convert that particular digital data into the form of light also, ठीक है। हमें पता है ना कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेटा कैसे ट्रैवल करता है, द डेटा इज बीइंग ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। दैट मस्ट बी श्योर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो फाइबर मॉडेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क्स एज अ ट्रांसीवर आल्सो, कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, प्लस it is going to translate or transform your digital signal into a form of light signal also, ठीक है, so that that particular data can be able to travel over an optical fiber, ठीक है जी। and the same thing happens at the receiver's end, और वो light signal digital के अंदर, digital फिर analog के अंदर, and then it would be dispersed to an individual device over that particular network। So this is how your things are going to be executed when you are going to extend your LAN। Hopefully that is clear to you guys, right? Then we have in fiber optic extensions, the fiber modems convert digital data into pulse of light, transmit over the optical fiber। Fine, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। This mechanism will successfully extend the LAN across the several kilometers। Yes, I have told you, right? Now this is the fiber optic extension। I mean you can see that that fiber optic is coming out of your building in the form of ये जो आपको black wires नजर आ रही हैं, ठीक है। And this is how your optical fiber, ये जो आपके पास orange wires हैं, they are being terminated at the hub, ठीक है। और वहां से आपके पास ये जो blue wires हैं, they are the local area network wires। They are coming out of your hub or a switch for the local area network, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ रही है। फिजिकली you can see how the optical fiber is going to be terminated at the back end and how your LAN interfaces are going out of that particular hubs, ठीक है। But make sure these are bit older technology। Nowadays we have the switches which do have certain sort of interfaces, उसमें आपकी फाइबर आके I mean terminate होती है, and then it will come out to connect with some other local area network, right? So that is all regarding the fiber optic, how it is being connected, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि जी रिपीटर्स क्या होते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। So electrical signals, now I am reading slide number 15 for you guys, right? ये मैं जनरल डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, right? Repeater fact is electrical signals gets weaker while traveling over the copper। Very much obvious, we have discussed so far कि ये electrical signals जो होते हैं they are going to be weaker when they are being traveling over the copper cable। A repeater, a hardware device, amplify the weakening signal received from one segment and transmit them onto another segment। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, पिक्टोरियली आपको बता रहा हूँ मैं। Now see,
दिस इज हाउ योर रिपीटर वर्क्स। यू हैव अ मैक्सिमम साइज ईथरनेट सेगमेंट। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेगमेंट है जिसकी 500 मीटर लेंथ है, उसके बाद सिग्नल आपका एटेन्यूएट होगा। ऑन द राइट हैंड साइड अनदर ईथरनेट सेगमेंट जिसकी मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर है, बिकॉज 500 मीटर के बाद आपका सिग्नल एटेन्यूएट होगा। उसके बीच में हमने क्या किया, वी हैव प्लेस्ड अ रिपीटर, that the responsibility of the repeater is it is going to amplify that signal which is going to be attenuated। ठीक है, 500 मीटर के बाद जैसे ही आपका सिग्नल एटेन्यूएट होना शुरू होगा, it is going to be again boost up by using that particular repeater। So this is how you are going to place multiple repeaters at the different distances during that particular transmission, so that your signal might not be attenuated on the way inside the LAN or local area network। So this is the main responsibility of the repeater। ठीक है जी। So hopefully that is clear to you guys। So and retransmit them onto the another segment। ठीक है जी, वो retransmit करता है आपके सिग्नल को, amplify करता है और retransmit करता है to the next segment। रिपीटर्स, वन रिपीटर डबल्स, टू रिपीटर्स ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशंस। आई मीन अगर आपके पास एक रिपीटर लगा हुआ तो वो डबल कर देगा, दो लगे हैं तो उसको ट्रिपल कर देगा, एंड सो ऑन। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस। आई मीन अगर आपके पास तीन सेगमेंट्स हैं तो अल्टीमेटली दो रिपीटर्स लगे होंगे, दे आर गोइंग टू एक्सटेंड दैट सिग्नल मोर एंड सो ऑन। अगर आपने 6 रिपीटर लगाए हैं, 7 लगाए हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी रिपीटर्स यू आर गोइंग टू प्लेस, एंड consequently आपके पास signals strength is going to increase, right? Computers attached to different segments communicate as if they are connected to the same cable, right? Question: can we increase the maximum cable length as many times as we wish by just adding repeaters? Answer is no। I have given you the answer in the previous discussion। मैंने आपको बता चुका हूं मैं, ये वही सवाल है। I mean what he is asking कि can we increase the maximum cable length as many times as we wish by just adding repeaters। अब देखिए ना, repeaters आपको पता है कि they are going to increase the reduce the attenuation and increase the length of the केबल। ठीक है, अगर आपने 10 रिपीटर्स लगा दिए 500 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, तो आपका सिग्नल जो है वो एटीन्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप भले हैदराबाद से कराची तक रिपीटर्स लगा के एसटीपी के जरिए नेटवर्क बना लें, बट दैट इज नॉट द केस। यू कैन नॉट डू दिस, राइट? द आंसर इज नो। व्हाई? एवरी रिपीटर इंट्रोड्यूसेस अ डिले। आपका जो रिपीटर होता है, इट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिले, दैट इज द मेन रीजन। सेकंड इज एक्सेस मैकेनिज्म सच एज सिस्मा सीडी डज नॉट वर्क विथ लॉन्ग डिलेस। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि सिस्मा सीडी जो आपके पास एक्सेस मैकेनिज्म है आपके डेटा का, आपके मीडियम का, इट वुड नॉट वर्क विद द लॉन्ग डिलेस, वो उसके साथ वर्क नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट इज ईथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज दैट एनी टू स्टेशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मोर देन 4 रिपीटर्स। अगेन दैट इज द सेम। द थर्ड इशू इज कि आपके पास जो दो स्टेशंस हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मोर देन 4 रिपीटर। अगर 4 से ज्यादा रिपीटर्स होंगे तो इट इज नॉट द ईथरनेट स्टैंडर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट you cannot extend the length of your network by adding repeater up to what you want, right? So I think that I already discussed with you. By reading this particular slide, you are also more clear regarding this particular concept, right? So this is what using a vertical segment, only two repeaters separated any two station in this segment for floor 3, repeater 1, repeater 2 and repeater 3, they are being used, and they are going to boost up your signals। What are the disadvantages of repeaters? Repeaters do not recognize frame format, they just amplify and retransmit the electrical signal। देखें, this is the disadvantage। repeater आपके पास क्या करता है, it does not recognize the frame format, it just amplify and retransmit the electrical signal। If a collision or error occurs in one segment, repeaters amplify and retransmit also the error onto the other segment। अब देखें अगर एक सेगमेंट के ऊपर कोई एरर आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो रिपीटर आपके पास क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा एंड सेंड इट again to the next segment, or ultimately it is not good for the network, right? डेटा है या एरर है, it is going to be amplified, और सिग्नल एम्पलीफाई होगा तो it would increase the strength of the signal or an error, and it would be creating problem for the next segment। ठीक है जी। So an Ethernet repeater, you can see the diagram physically। आपका Ethernet repeater जो होता है वो it is something like that, right? This is the front end of the repeater और this is the back end of the repeater। ठीक है जी, आपका back end से if somebody asks you that कि जी Ethernet आपका repeater कैसे नजर आता है, तो you must have to tell them कि जी हमने repeater देखा हुआ है।
right? We have to start with bridge. अब आ जाएं ब्रिज के ऊपर. Bridges are standard connection same as other computers. अब देखें रिपीटर आपको समझ में आ गई चीज. अब ब्रिज आपके पास क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर यू. अ ब्रिज इज अ हार्डवेयर डिवाइस आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट टू एक्सटेंड अ लैन. I mean, first of all, you have to understand that bridge is something that is going to connect two different LANs or two LANs, right? Unlike a repeater, a bridge use two NICs to connect two segments, listen to the all traffic, recognize frame format, forward only correct complete frames, discard the collide and errored frames. Actually, ये आपके पास रिपीटर के वे से काम नहीं करता. इट इज जस्ट टू कनेक्ट टू मल्टीपल लैन्स. ठीक है, राइट हैंड साइड पे एक लैन है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक लैन है. उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है. यू हैव टू यूज द ब्रिज. इट यूज टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू कनेक्ट टू सेगमेंट्स. अब सेगमेंट ये क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज लैन ए हमारे पास राइट हैंड साइड पे है और लैन बी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस यूज होगी दैट वुड बी ए ब्रिज. लिसन टू ऑल द ट्रैफिक, ये आपके पास सारी ट्रैफिक को लिसन करता है. ठीक है. रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट, जो रिपीटर है आपका इट डज नॉट इंटेलिजेंट, इट डज नॉट recognize the frame format. ठीक है, लेकिन ये आपके पास recognize करता है frame format को. forwards only correct complete frames. ठीक है, सिर्फ उन्हीं frames को आगे forward करता है जो आपके पास right होते हैं या उसमें कोई error नहीं होता. discard the collided and errored frames. अगर किसी frame के अंदर कोई issue होता है it is going to discard it at the one end of your bridge. अब आ जाए diagram के ऊपर. so this is something like this is segment 1 on the left hand side, and on the right hand side you have a segment 2. Let's suppose U, V and W3 computers are being connected at segment 1 and X, Y and Z are the segments which are being connected at segment 2, and they are being connected by using a central device that is called as a bridge. Standard connection same as other computers, right? So this is something like a bridge. Ethernet bridge, you can see this is, make sure कि ये पुरानी पिक्चर्स हैं. ठीक है जी, ये कोई लेटेस्ट नहीं है. अगर आप लेटेस्ट ब्रिज, आजकल तो ब्रिज खैर यूज होते ही नहीं है हमारे पास, लेकिन whatsoever the bridge is, this is the diagram for a bridge. This is the front end, this is the back end, that how you are going to connect your two networks by using an Ethernet bridge. आजकल हमारे पास switches यूज होते हैं. Even not hubs we cannot use inside our networks, right? Then frame filtering, a typical bridge has two NICs, a CPU, a memory and a ROM. It only runs the code stored in its ROM. The most important task a bridge perform is frame filtering. Actually आपके पास ये क्या करता है, आपके पास फ्रेम को फिल्टर कर रहा होता है आपका जो ब्रिज होता है. ठीक है जी. What is frame filtering? If both the source and destinations are on the same segment, it does not forward the frame to the other segment. A frame is forwarded to the other segment if the frame is destined to that segment. Broadcast and multicast frames are also forwarded.